bring that animal here? We don't know. And I am waiting here and seeing. I felt frustration in helping the sick ass because this person cannot resist himself after seeing the pain of any living being on earth, especially the animals, especially the stray animals, because they are helpless. Helping the helpless is the human nature. Helping the helpless, the character only human possess, not the man. Man is social, cheating low life personality of selfish desires. That's why the man is called animal. But human, he senses others' pains and immediately he tries to rescue them, and then the person comforts the animal, relieves the pain and restores the smiles. That's the perfect human. So here I am here to see the perfect human, which I see. I am waiting for him, and I am waiting how much time he may take to come here. I don't know. I am waiting. Thank you. Till that time I wait. Close. बंद कर. इसको लाना पड़ रहा है, नवरात्र का समय है। चलो चलो चलो, आओ भैया आओ, मतलब पीछे रहो, तमाम आदमी को देख के आओ, नहीं आगे चल रहे आओ। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, थोड़ी पहचान आ गई। मैंने पीछे पैर जो है वो गया, लकवा मार गया। अच्छा, इसलिए वो टेक नहीं ले रहा। और पीछे का दोनों लेग डॉक्टर साहब इसको बोल दीजिए कर देंगे। पीछे से ले लो बेटा, यहाँ पीछे ले, वो दोनों पैर दिखाना। हाँ बस ठीक। द टाइम। इसका पैर मोड़ दो संग था, इसको बैठने दो थोड़ी देर। इधर ले लो, इधर ले लो। मैं बोल रहा हूँ इधर चलो, उधर चलो। आप इस साइड आ जाइए, धूप पड़ेगी धूप पड़। हाँ आपके बगल में डॉग खड़ा है, उसको भी जरा हाँ देखो। साथ में। Now it is. डॉक्टर साहब, Now the time is. नहीं, डॉग आपके बगल में है, वो भी एक साथ दोनों। हाँ बोलो। Now the time is about 10 o'clock in the morning, and just now the donkey is brought here, and with great difficulty it could walk. It is unable to stand because it almost lost the both hind legs. The right one is paralyzed and left one is unable to stand. And in this condition, these two people took lot pain to bring this animal here. सर कहाँ से लाए हैं आप? ये वही हॉस्पिटल चौराहा, From a डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। half a mile distance. From that much distance, it was brought here, and it is not humanly not possible to bring this animal all alone. Assistant is needed. Not one, at least two. Two people are required to bring such animals here. And to bring this animal, he took bread and he took water. He offered these both the things to win the confidence of this animal
the person fed the animal and anyhow pulled him here. Now it needs strong medical treatment, strong doses of antibiotics. Of course, I am a medical doctor, but of human. But the animal doctor is to attend to clean the wound and to treat it. This was the ass which I have seen about a week back. Now all of a sudden, in the morning, my Guruji traced it on somewhere on the city road. When he came back, he collected all the food and water with him. And anyhow, with the help of the one labor, he brought the animal here. And he is facing a lot of difficulties here. He started the institution serving the stray animals in 1975. Since then, he was serving. And the buckets, the condition is not good. And the furniture which he is using and the wards he is using since long was not under repairs. This is all due to lack of budget at him. Manniya Menka ji offered him the finances from the government to help the animals, such animals. But due to some reasons, the gentleman rejected the offer, stating that he doesn't need the money to manage this animal's treatment due to manipulated accounts business. He simply demanded only one servant to bring the animals to this place. This is a big problem. Bringing the animal to this place is a big problem. Diseased animal especially. And this is Soniaji's constituency. Here is the real human, sensing the pain of any living being, especially stray animals, and senses the pain and rescues them, whatever the condition is. He doesn't bother. He simply goes and brings the animals and gives the relief. Look at it and how he is serving the animal, trying to give the इधर से आप इधर आओ, कैमरा इधर लाओ, देखिए वो भी आ रहा है। नहीं उसको भी आने दो। Yeah. इसको कंदरा खोल के इसको पलटो। And see how he is washing the wound, and the many houseflies. नहीं मिलेगा। वो घुटने में भी चोट है सर, घुटने में भी चोट है, वो मक्खियाँ बैठ रही है। हाँ वहाँ पर भी है। हाँ ये मिला हो तो बढ़िया रहा। हाँ मिलेगा ना, अभी तो शुरू हो रहा है। ये हमरे ख्याल से ये कुत्तों ने नोचा है क्या इसका, यहाँ का नहीं गिरे कट गया। अच्छा हम कहीं रास्ते गए सगिल मार थी। अब इसको राहत मिलेगी। अब इसको अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल दिखाना पड़ेगा। हाँ वही हम सोच रहे हैं कि ये नवरात्र is giving the primary treatment अच्छा just to avoid
house flies. હમણાં બહુ જ હા હુઆ तुलसी को मार अंदर वाले हाँ ये ठीक है The animal cannot express where the pain is, and one has to search out all the injuries which the animal got all over the body. But somehow I think we missed some of the injuries on that day, first day and second day. Now they are clear, the wounds are clear. On the first day and on the third day, we noticed some injuries. And there's here is a dog which got injured. जाओ सब बैठा एक उठा के लाइए रख दो जाओ अब वो धूप में से हटा के छाया में कर दें. हाँ हाँ अभी करेंगे Anyhow, अब कुछ रिलीफ है उसको. हाँ हाँ Now then animal अभी उठ के खड़ा होगा sensing some relief. तो अब बैठ जाए बंद कर दो थोड़ी सी बंद करना क्लोज Now it is about 11 o'clock, and as we were serving, that's comfortable now could stand on her own legs, and it is due to prickly heat and very bright light. I came inside the garden to speak out something. I pointed out one incident and given the example Menkaji. Menkaji offered something to him, this gentleman, and now I try to say something about Tata, Birla, Tataji, Birlaji, and then Singhania families of Kanpur, and the rich guys, the business people. Actually, they make the nation. I feel so. And the political heads, mainly the Sonia ji, and in her constituency, we are, and the person is living here. And Dharma Guru, the people who take contract, they are the contractors from God, I think. They feel like that. They speak all the time, humanity. Neither they can tell human, neither they can know. They can scientifically prove humanity or human. They only deliver lectures and they doesn't serve anything. No deeds, only lectures. Tata, yes, I think he is number one. But I'm sorry to say one thing. He had gifted many vehicles to many people, the rich guys. And I'm sure nobody uses that car in routine life. In what way you get the benefit, I don't know. Because I'm not of your caliber, but I know that you are a perfect human. But missing something which is very essential, essence of the humanity, regarding health of the people, health of the animals, and the sufferings. And you missed this very important human who is dying. He did all his life, served the stray animals, and he is unable to carry out his duties to his full heart. Lack of
funds or help or anything. Menakaji offered, but the person is not ready to handle the matter in a corrupt way. In writing the accounts, managing the accounts, and this is the unfortunate character of India. This gentleman needs the little equipments, the buckets, the vehicles to bring the animals, to feed them. That's all. And a person, one or two assistants he needs. All that he needs. And you're spending and your kind heart, but doing very big things, but missing very important links, the real people, the real service people. And the Dharma Gurus, they never serve anybody. They only speak out. They speak a lot about God, but they can't define God, I'm sure. And I'm sorry, I introduce myself. I'm basically an eye surgeon. For some time I was a international member, American Academy of Ophthalmology, USA. So I got good training and good education from that conferences. I picked up the world latest things. I am right. And afterwards, I started my research work on zero. The topic zero was given to Vivekananda about 150 years back to speak in Chicago. The same topic I took. Now I am here with zero, zeros, and cross zeros. The 5 signs, the cross zeros, 5 signs, I am paying attention, and it is the evolutionary cross life signs, cross zero signs, under which we can define religion of God's voice, philosophy produced by bar of 3-dimensional cubic life bodies, induction science, hue science high, and its cross life science, person of hue science, phi, the true, healthy, wealthy life science of healthy mind and by healthy body. Coming to the topic, I was talking about Dharma Gurus. Here I had a bitter experience in this area. One, the most renowned person in this local areas is Kripalu Maharaj. I heard and seen him personally and seen his hospital. I accepted to work under him, for him, because I was interested only in serving the masses. Yes, he was attending, he was paying. Of course, he doesn't pay anything. He makes the doctors to serve the people free of charge. That's right. But to me, he is not the right person. He doesn't do. The reason for it is simple, very simple. Look at him. How much worried he is. Why?
Is he human? No. I am very sure. Can he define God? Can he define the shape, size, color of the God? No. And what is the aim in serving? I am very doubtful. So this is the affair here. The religious people always talk of humanity, and still the wars, quarrels continue. The disputes, the quarrels of making money, big assets, unaccounted assets, false accounts, making big amounts, not useful for the society, not useful for the service of the man. Is it right? How it is right? Pure money management science is needed, not money minting. The person becomes richer and richer and richer. He is the big cheat. And so are the religious people, and they are scot-free by the government and governments. I simply asked what they did, what the services they did, not the lectures. Zero. I put zero for them. Coming to the topic of realizing the real human, and he is here in living condition, and he is doing the service, helping the helpless, really helping the helpless. That's the true kind heart, that's the real truth, bitter truth. And without any help, any kind of help from anybody, the real human always gives away, doesn't accept anything in return. That does not mean the people like you, of course I am criticizing, not criticism actually, I want to bring your attention on this personality. That's my intention, not to insult you. And you are the people who can make our India a real nation. And you have the capacity to turn the nation to that position. I know that. If you pay little attention, and if you realize this is the real human, he never asks anybody, he never expects any help from anybody, and does very sincerely the services, he delivers the services directly with his full heart, relieves the sufferings. It's a great thing. Really great thing on earth. Mother Teresa, she helped only the man, but not she. I never heard that she helped any suffering animal. So, realizing the pain, the suffering, even the animals who cannot express anything, this person senses the pain and helps him and restores peace, delivers peace for them, is the real human. And scientifically, I am ready to prove how this mind he has got. In nature he got, but scientifically we can make any person a true personality, true love life science of unselfish desires. Mind can be made, can be produced. I mean,
we can produce human. By birth, nobody is human. By birth, everybody is man. Social, cheating, low life of selfish desires, personality. No cheating, low life, personality of unselfish desires is human. That's a hue life science, high, and the person is philosopher, and human, man, hue science personality man is humanity. Once I asked a gentleman, a big saint, what's the difference between man and human, I said. I asked the question. And he said, we are all human, I am human, all these people are human. Oh, really? All the people you are looking, are they kind-hearted? Had they served any suffering? No. Then how they are human? And all are selfish. They make their money, they make big money, they earn a lot, and they don't share anybody. They won't help any sufferings. How they are put in human? Then who are the devils? If they are the human, then where are the devils? Who make our nation so bad? Nation of fastest growing richest in the world and fastest growing slum dwellers country. The slums, the dwellers of the India mounting to 35 to 40 crores. And this is the situation at present of India. And where you want to take our nation to? Please, we have confidence, we have hope, still we hope. Someday you pay some attention on this type of personalities and you do help. I simply can thank you and can bless you, not more than that. And I bow my head with thanks, with grace, because you are human. And we hope something from human, not from devils. Thank you, sir. घूम रहे हैं, ये कहते हैं हम मनुष्य है। भैया ये मनुष्य है तो हमें समझा दो तो राक्षस कौन है, हमें समझा दो ये पशु कौन है, बंदर कौन है। तो तुलसीदास जी ने तो रामायण में साफ साफ समझाया है, एक मनुष्य चरित्र से मनुष्य को पहचाना जाता है ना। जीवन चरित्र पूरा सुनने के बाद उस चरित्र के एनालिसिस से पता लगता है ये मानव है। चरित्र राक्षस का, सारी राक्षसों परों को पीड़ा देना, मार डालना अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, उन्हें राक्षस की संज्ञा दी गई है रावण का, राइट। और बंदर समाज को डिफाइन किया तुलसीदास जी ने। एक बंदर समाज, वाली सुग्रीव ब्रदर्स, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, ये भाई ये राक्षस जाति करके घोषणा किया, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये मानव जाति करके संज्ञा दिया। मैंने ये पूछी, आपने मानव को देख लिया है, मतलब साक्षात्कार हो गया रामचंद्र जी, है ना। हाँ, मैं गुरु जी मानने लगा। मेरा हिंदी बहुत गड़बड़ है, रफ बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये फिल्मी हिंदी सीखा है और सीखा हूँ तो बहुत अच्छी आप बोल रहे हैं हिंदी। थैंक यू। मेडिकल पर्सन हूँ, MBBS, DOMS, हाई स्पेशलाइजेशन। देन उसके बाद अमेरिकन एकेडमी में इंटरनेशनल मेंबर, अमेरिकन एकेडमी में। उस मामले में मैं यूपी में चौथी पर्सन था। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल लाइफ हिस्ट्रीज में देखें
तो पहला डॉक्टर डी बी चंद्रा, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट आई का, आँख विभाग का, वो पहला इंटरनेशनल मेंबर थे अमेरिकन एकेडमी में। दूसरी उनका डॉक्टर अवस्थी, अभी जो प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट है वो मेरे जूनियर है वो। और बाद में मैं अमेरिकन एकेडमी में इंटरनेशनल मेंबर लेवल पे मैं काम करके आया हूँ। सो सर्जरी में, माइक्रो सर्जरी में मैं वर्ल्ड क्लास का देख के आया हूँ। मैंने छोड़ी है सर्जरी, आई फील्ड मैंने छोड़ी है, उसे पसंद नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा करके नहीं। ये एलोपैथिक मेडिसिन हम पढ़ते चले आ रहे हैं, एमबीबीएस पढ़े हैं, डीएमएस पढ़े हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय का मैंने स्तर का सारी देखने के बाद हमने सारी दुनिया की दूसरी छोर तक देख लिया है, माइक्रो सर्जरी करके आया हूं मैं। ये पहचान आ रही है साफ, ये जो कर रहे हैं हम गलत है, बेसिकली एलोपैथिक गलत है। मैंने यही चीज हैनिमैन को भी हुआ था, मैं हैनिमैन को हुआ तो मेरे को हुआ, मैं उस लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, वो बात नहीं है। तर्क में हम देखते हैं तो कहते कुछ है करते कुछ है, ये वो आता पता नहीं है खुद क्या पक रहा है। ये है हालात सर्जरी का, मेडिसिन का। तो इसमें हम फेल होने से मैंने पहले मेडिकल लाइन छोड़ी। मैंने आई सर्जरी, आई का बात बंद कर दी, क्योंकि ये बंदरों का सर्जरी है। Myself, ex-eye surgeon and researcher, zeros and cross zeros. Now, today, I'm meeting this young gentleman, young boy, and another young boy. This is Mr. Pathak. Is with a sensible politician, young and dynamic. That what I noticed. And moreover, over all this, is having living spirit, Atma Jivit. So he is having the capacity to identify human. Human, I speak, it is not general English. I am a scientific person, scientific sense it is. At present, India, what India is in the international arena is, it is a country of fast growing, richest, and country of slums. Means, is it good or bad? Really the bad. All corrupt India. It hurt me because I am Indian. I am unable to withstand this. We have to pay attention on this. Only political people can turn this picture to real picture. And I bet my life, for the last 36 years I am in Raebareli, I haven't seen the Indira Gandhi regime, the Rajiv Gandhi's regime, then I have seen this Sonia Gandhi's administration. These people had fed this district with heavy money and all, but the villages remained as such. They were not at all developed. The people are not developed. Why so? It is very bitter to listen, but this is the bitter truth. The most corrupt people didn't allow the politicians, big top politicians, to serve the masses. That Rajiv Gandhi accepted. जब हम सेंटर से 1 रुपए देते हैं, पब्लिक को 10 पैसा मिलता है. At least I, on the very next minute when I listened the news, I realized that this is the person, real person speaking the truth. He has guts to do it. Yes, something we can expect good from him. But unfortunately we lost him. But now who can manage this country in a finer way is only one answer from me. It is only Rahul Gandhi who has the capacity to manage India, and we want to see our Bharat, Swatantra Bharat on the high level on the planet. We can see someday.
and all the rest, वो तो I speak in Hindi a little bit word, वो तो लंगड़ी मार सकते हैं बढ़िया, पब्लिक को बहका सकते हैं, वोट राजनीति कर सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, देश को तरक्की करना और सच में दिल से जनता को डेवलप करना करके जीते हैं, सांस लेते हैं, वो मैंने इनमें देखा है, बहुत करीब से देखा है। हाँ, हालांकि मैं कांग्रेस में मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, पहली बार, मैं तो मेडिकल आदमी हूँ, मैं सेंस करता रहता था, मेरे सेंस इतनी ही है, बाकी हमको नहीं आता। एंड नाउ दिस यंग जेंटलमैन came and asked me something. I started introducing myself. I lost everything here. But what I lost is not mine. I brought everything from USA to serve the masses of India. And my family basically belonged to Andhra Pradesh. My parents forced me to shift to south. But I didn't agree. See, I am staying in India. I want to serve my Indians. Wherever they are poor, wherever there is a sick person, there I have to work. I am working. What's the harm if I serve in Raebareli, in UP? There was a big clash in between me and my brothers and father, my wife, because they are concerned with the properties, not the services. There came a big split. I took my adamant action. I didn't surrender. I left the USA house and came back to India to serve in Raebareli. That had my parents, my wife, all together. They tried to snatch everything from me. They could not. Ultimately, they did all the mischiefs. They looted me by utilizing the then standing superintendent of police, then standing district judge, district collector, under the guidance of Chief Justice, High Court. All were corrupt. Because they got big amount from my family, they did all nasty things. They put me 28 days house arrest in SP house, Bangla. They snatched 55 lakhs worth computers, equipments. They left. They had to leave me, so left me. And now the rest of the instruments, what's the story I was telling to him. Then the public started looting, and only the corrupt people here, they looted all, not the good people. And this young gentleman came and assuring me that I need not to bother. First of all, he is assuring, and he will be trying to provide something from our leaders in justification to give you some job or something, some work to you. He said, at least he had given me that assurance that is sufficient for me to breathe comfortably. And if it happens, it's okay. If it doesn't happen, it's okay. But I lead my life, whatever conditions come. I'm a researcher. I'm going on my work. And what I want to say is, now I am coming to the topic. Here, the people, though there are so many bad people, but there are real human also here, really human, where I identified one and I labeled him the perfect human I have ever seen in my life. I have seen many countries, many conferences I studied, but real human I found here. So I called him, in my own way of expression, I called him Guruji. And afterwards this young boy, the budding politician, I pray God to bless him to bloom a big flower. The fragrance will spread all over the, I say not only Bareilly or these places, but to whole UP also. I am seeing the tinge in him. He is having the guts to face, and I feel he can cooperate and he can work on
wishes of Rahul ji. So I have full faith and confidence. I believe God, and it is only one word from me. God may bless him all the way. Because he is having the capacity to identify as a common man to me. He is not scientist. Even not scientist, but identifying a human. Real human means he is having the third eye, sixth sense. He is having the sixth sense. So human, he is basically a human, living heart, kind heart, thinking about the poor, want to serve them at his doorstep. What Rahul does here. I have seen many MPs. They never go to anybody's house. Rahulji I have seen. They visit all huts also. But he is having the heart not to cheat, but to want to help the poor. That's what I sensed. And he is really true in that sense. So that heart is valuable. And this young boy, I am seeing that dynamism and the sportsman spirit is having, and he is accepting the Guruji, and he is identifying as something like human, because he cannot state human. Human is a scientific word, mathematics. Though not scientist, he is identifying, he is having a special sense, and he is human, perfect human. God may bless him. He may, tomorrow, he will be Godfather. Godfather word, Hindus cannot understand what Godfather is. Godfather in Hindu mythology, it is Garukmant, Vishnu ji ka Vahan. And at present, he is Hanumanji, Ram Lakshmana ka Vahan. Yeah, this is grade 2 officer. O 5 sir is officer. It is 5 signs. 5 itself, officer itself is a law. Himself is a law. That is the officer, guested and non-guested, that is the difference. And I see him, a good, perfect officer life. He's having dynamism, young man, energetic, like Hanuman. Don't go through only body. Body is also fit, but his energy is having is very dynamic. And moreover, all the way, why I am attracted by him, not by his promises, but by decisions, how he is taking, what type of mind he is having. That's what I am analyzing. Right? I credit him, this personality. Someday, I may not be surviving in future. I don't know how long I will survive. But this gentleman is having the sense of Godfather. He will be Godfather, and under him, the poor people will be served and they will be comforted. Their humanity is established. Then only it is humanity, human world. I feel secured in this. Thank you, sir. मैं ऑल ऑफ अ सडन अभी पहली बार बोल रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ कि एक मेडिकल पर्सनल को आप ये जर्नलिस्ट ना बनाइए। लेकिन गलती से मैं आपके साथ रहते रहते रोज 2 थप्पड़ खाते, मैंने बोलना सीख लिया। हाँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन और फाइनल वे में बोल सकते हैं। देखिए, ये एक संयोग की बात है। मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ 2 मिनट। अच्छा, my question is the same one. Have you ever seen human? Can you identify man and human? No. Because you have never seen a human. Because you have no sense of identifying human. Sixth sense, तीसरी आंख, दया, करुणा, नकली नहीं, धोखेबाज नहीं, संपत्ति बटोरने वाला नहीं, हर प्राणी का दुख दर्द समझने वाला,
हर प्राणी का दुख दर्द समझने वाला, और जो नर नारी नारायण एक नहीं होते। इंग्लिश में हमने बोला मैन एंड ह्यूमन, हिंदी में बोले तो वो नर नारी नारायण अंतर है। नारायण सत्य सत्य ज्ञान, प्रज्ञावान प्रज्ञावान मानव होता है, और रामचंद्र जी होते हैं रामचरित मानस। एक मनुष्य का पहचान उनका चरित्र से होता है। आप बाजू में बैठे हैं, मेरा गुरुजी है। दुनिया यहाँ आपको श्याम साधु नाम पे पुकारती है। हाँ, वो नाम भी बड़ा सुंदर, नाम दिया गया वो भी सुंदर, वो नाम बिल्कुल सार्थक है। मन को साधे हुए हैं वही साधु होता है। अपनी चाहे सब खत्म, दूसरों के लिए जिए। जो प्राणी दुखी है उसको मैं इलाज करता था निःशुल्क, जो दे तो लेता था, नहीं तो नहीं। मैं अपने आप को मानव समझने लगा। जब आपके सामने आ गया तो मेरा बोनापन का एहसास हुआ। ये तो जो नर रूप में नारी रूप में मनुष्य शक्ल में नहीं, इंसान नहीं, नर नारी पशु रूप में घूम रहा है, उनको हम इलाज करते थे। लेकिन आप वास्तव में पशु, जो स्ट्रे डॉग्स, सड़क में जो जानवर घूम रहा है, उनको बीमारी होती है, उनका तकलीफ सेंस करने वाला चाहिए। पीर पराया जाने रे वैष्णव जन, तो पीर हम आदमी की शक्ल में जो लोग हैं उनका तो पहचानते थे, लेकिन जानवरों को नहीं पहचान पाते थे। लेकिन आपने पहचाना, आप उनको बराबर इलाज करते चले जा रहे हैं, उनको सेवा करते जा रहे हैं, उनको तकलीफ दूर कर रहे हैं। तो इंसानियत कूट कूट के भरी है, माने मानवता का मुहूर्त है। ये कर्म से पहचाना जाता है। आपने सारी जीवन 75 से यहाँ ये सेवा शुरू की है करके सुना, और प्रकृति का इतनी लगाव है, ये तो भगवान का देन है। तो ऐसा है मुहूर्त। और इनको ना फैमिली की चिंता है, ना किसी का कोई चिंता है, ना खुद की। जब खाना नहीं है तो बेलपत्री तक खा के जीवित रहे, किसी की हम मांगने नहीं गए। तो यही तो पहचान होता है मनुष्य जाति का। वो मांगना नहीं जानते, देना ही जानते हैं। जिंदगी में कर्म, सत्कर्म, कुकर्म नहीं, सत्कर्म अर्पण करते हुए सारे जीवन जिए हैं। तो मनुष्य, वो रामचंद्र जी एक बार जन्म लिए परमात्मा रामचंद्र जी के रूप में, अब जो ये भगवान इस रूप में घूम रहा है, पहचानने की क्षमता यहाँ किसी को है ही नहीं, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए मैंने कहा इंटरनेशनल एरेना में, उसमें ये प्रश्न उठाया, हैव यू एवर सीन एनी ह्यूमन डूइंग द ह्यूमैनिटी सर्विस? Yes, humanity means not only serving the man or woman or human, but also animals, all living beings. So there lies the Paramatma, there lies the spirit, Mahashiv, Sadashiv. So, due to these reasons, I accept this is my Guruji and is ideal. And if anybody understands, if he follows, and he will be also human. थैंक यू सर। क्योंकि समय कम है, जब मैं संजीव जी के यहाँ से आ रहा था तो रास्ते में गधा दिखा। अब इस बुढ़ापे में बंदर भोज मेरा रोज होता है, हजारों पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी सेवा करते हैं। किफायत से ये डॉक्टर साहब मिले तो अब इन्होंने हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाया। उत्साह ये बढ़ाया, देखिए मान अपमान वे भगवान शंकर भी नहीं बर्दाश्त कर पाए थे, तो हमारे मन में इतनी बड़ी ग्लानि तो है इस समाज के प्रति। तो डॉक्टर साहब तो खैर बहुत हाई फाई अथॉरिटी हैं, अमेरिका में रहे और इंग्लैंड और सिंगापुर इनके पैर के नीचे रहा, बहुत आते जाते रहे। हम तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ न होते हुए भी हम जो एक सवाल उठाते हैं उसका जवाब लोगों को देने में आंधी आने लगती है। 3-4 साल पहले भद्राचार्य, जिनकी फीस उस समय 40,000 थी, और मैंने लिख के 2 लाइन पूछा था, ये महाराज राम कथा कहते कहते आप बूढ़े हो गए, और राम कथा सुनते सुनते मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। कृपया आज मैं आपसे जानने और सीखने आया हूँ, केवल जानने के नहीं, सीखने आया हूँ कि राम ने ये किया, रावण ने वो किया, हनुमान ने ये किया, महाराज जी आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं निकला।
आपने क्या किया? Nothing. और किया हो तो हमको बताइए ताकि हम कब से करें। तो कुछ किया नहीं, ये प्रभु की लीला थी। संदीप पाठक के बारे में बहुत गलत रिपोर्ट वहां यहाँ के कांग्रेसी नेताओं ने भेजा होगा, तब संदीप पाठक को राहुल जी ने या सोनिया जी ने कोई महत्व नहीं दिया। आज श्याम साधु बोल रहा है। श्याम साधु तो हम तो समझते रहे कि हम इंडिया में जो कुछ है, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमको और जगा दिया। डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम दुनिया के मंच में हम वन पीस आपको साबित करके ही मरेंगे। हमको वन पीस साबित करवा के हमको नोबेल पुरस्कार और ये पुरस्कार नहीं चाहिए। यही श्याम साधु है जो मेनका जी के बारे में दैनिक जागरण अखबार में दे दिया था कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों? उनका प्रस्ताव था वो जाल बनाओ, संस्था बनाओ, पैसा ले आओ। फिर लोगों ने कहा कि साहब बड़ा उसमें बड़ा बवाल है, पैसा लाओ, सब लिखो, और यहाँ कमीशन वहाँ कमीशन। हमने कहा ही भैया ही इसको कहना आपको झूठा लिखना पड़ेगा कि मैंने गधे भैया को बादाम रोगन पिलाया है, गौ माता को मैंने काबली चना खिलाया है। अरे हमने कहा ये हमसे नहीं होगा। खैर, तो संदीप पाठक के बारे में हमारे जो हाई कमान कांग्रेस में वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके कानों में संदीप पाठक के बारे में उल्टा सीधा यहाँ के नेताओं ने अगर कुछ भी भरा हो, तो मेरा एक सवाल है क्या कि फिर दूध का धोया कौन है यहाँ रायबली में, जरा बता दीजिए। कौन है दूध का धोया? और अगर है तो नाक को टेस्ट करवाइए। देखिए, मैं अवघड़पंथ का साधु हूँ, कर्मयोगी साधु हूँ। मेरा लंबी दाढ़ी लंबी चटाएं वाला मैं नहीं हूँ, मैं तिलक का कंठी माला वाला नहीं हूँ, लेकिन कर्मयोगी साधु हूँ। और कर्मयोगी साधु की सिर्फ एक पहचान होती है कि जो कहता है वो हो जाता है। सोनिया जी के बारे में मैंने बम्पर रोड से उनको चितवाया था, बांदा तक मैंने भोज किया था। इस बात को मैं कई बार कैमरे के आगे बोल चुका हूँ। मनोज मट्टू से मैंने छुआया था, खरबूजा और एक एक मन सामान लेके मैं गया था। कल्लू मेहरोत्रा ने हमारी मदद की थी, बम्पर रोड से सोनिया जी की थी, लेकिन उसका रिस्पांस हमें ये नहीं था कि हमें पैसा दो, हमें भीख दो, कम से कम सम्मान तो दो, ताकि रायबरेली में जो लोग हमको पागल कहते थे उनके मुंह पर जूता पड़ता। जरा मान सम्मान की भूख भगवान शंकर को भी थी। मैं भगवान शंकर से बड़ा नहीं हूँ। एक दिल्ली बुला के माला पहनाया गया होता तो हमारी बेटियां, हमारे दामाद, हमारी पत्नी, बीवी, वो हमारी इज्जत करती। वो तो आदमी करती, मर तो गए, कहाँ मिला? हमने कहा हम लेने के लिए नहीं बैठे थे मूर्ख। अरे कम से कम तुमको दिल्ली बुला के एक माला पहनाई होती। 24 दिन मैं अनशन में था, मई जून के महीने में। जितने लोग करोड़ों रुपए लेने वाले हैं राहुल जी से, सोनिया जी से, क्या वो 24 दिन अनशन में बैठेंगे मई जून में? आइए जरा बैठिए, जरा हम भी देखते हैं। अब बैठेंगे तो करोड़ों ले चुके हैं आप, लाखों में नहीं करोड़ों आप लोग ले लेते हैं। वो एक एक बच्चा जानता है। खैर, हमारा कहने का मतलब है कि संदीप पाठक अगर दूध का धोया नहीं है तो रायबरेली में जितना भी कांग्रेसी लीडर है जो XYZ, क्या वो दूध का धोया है? क्या वो इस बात को सिद्ध कर सकता है? नहीं सिद्ध कर पाएगा। तब हमको बड़ा धक्का लगा जब इसके साथ धोखाधड़ी हुआ। तब मैंने संदीप के बारे में कहा, और जो लखनऊ मेल में छपा वो आज भी वो बात कायम हो गई कि कांग्रेस पार्टी की इसमें बहुत हानि, मतलब बहुत उसकी हानि हो सकती है। लखनऊ मेल में छपा था, जो मुंह से निकला वो हुआ, और यहाँ से अमेठी तक सफाया हो गया। क्या अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा। अब हमारे खानदान में वो बीजेपी में है, अब हमारे दामाद लगते हैं झंडा। हाँ भैया लगाओ। मैं बाई नेचर, भाई हमको राइवली पहले दिखती है, और मैंने चैलेंज किया है कि यहाँ पर जो भी एक ईंटा कील पत्थर अगर किसी ने दिया है तो रायबली को कांग्रेस ने दिया है। ठीक, कांग्रेस के बारे में डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, राजीव जी के बारे में भी आप बोलते हैं कि उन्होंने, तो मतलब कुल जब कांग्रेस में जो व्यक्ति हो उसको आप लोग अपने नॉलेज में रखिए। बहुत अहंकार था ना वहां पर। संदीप पाठक को दूध की मक्खी के जैसा फेंक दिया गया। जब डॉक्टर साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वो MLC जो थे इनके घर पर आए, तब वहां मैंने ललकार के बोला, हम कहा लोग अहंकार छोड़ दीजिए, और जो हुआ है बहुत गलत हुआ है।
तो कहने का मतलब है कि अगर संदीप पाठक ने कोई पैसा मारा हो, हड़पा हो, कोई कांग्रेस के साथ धोखा किया हो, इंदिरा जी के गोद में बैठने वाला ये रायबरेली का पहला शख्स है, ये पहला बालक है पूरे जिले के अंदर। सर मैं ये बात तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात तो मैंने इनमें सेंस किया है कि एक बार यदि आप ऐसा मौका दें तो आप नेक्स्ट टाइम मैंने 2-2.5 साल 3 साल में आपको इलेक्शन में आप खड़ा करवा दे जी, हारे तो हम यहाँ फांसी लगा के मर जाएंगे जी जी जी। और आप जीतने के बाद यहाँ हर घर को गरीब लोग जो आपका नाम लेके जीते, सोनिया जी करके दौड़ के आते हैं। मैं ITA कॉलोनी के पीछे रहता हूँ बालापुर में, बराबर देखता रहता हूँ। जेल जपेंगे वो लोग, लेकिन उनके मुकद्दर में कुछ नहीं है। आज भी 65 साल में कुछ भी नहीं मिला सारी गाँव। सही बात। तो ये चीज आपको देखने नहीं मिलेंगे जी। और वास्तव में और जितना जरूरतमंद है वोट दे रहे हैं उनकी भला करके आएंगे, ये मेरा भरोसा है और कुछ नहीं कर सकता जी। तो ये संदीप जी ने जब डॉक्टर साहब के बारे में सुना कि प्रमोद नाम है ना, इनमें लक्षण है तो ये नहीं, ये पैदाइशी नेता है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये एक मिनट। अच्छा एक बात बताइए, संदीप जी ने एक फूटी कौड़ी, एक नया पैसा क्या संदीप से हमको मिला? एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, कुछ कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी संदीप से हमें बहुत कुछ मिला। क्या मिला? हर कार्यक्रम में ये हमको बुलाता था, हर कार्यक्रम में बुलाना, सम्मान देना, ललकारना, और हर दुख में आपके बारे में जब इसने सुना तो देखिए भाग के आया। ये बिजनेसमैन आदमी है, छोटा मोटा बिजनेस है, इसको अब खाने का आराम का टाइम था ना। इसके बाद ये आपकी तरीके से ये भी है, इसके बाद कोई सवारी वगैरह नहीं है, अपने दोस्त को लेके आया, ये अपना मीटिंग छोड़ के आए, ठीक। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना है, इस घटना को देखने के बाद एक बार दिल्ली में बैठे जो हमारे नेता लोग हैं ना, जरा हम चाहते हैं कि वो सोचें एक बार कि संदीप पाठक अगर दूध का धोया नहीं है तो रायबरेली में कौन दूध का धोया है, जरा बता दीजिए हमको। अगर दूध का धोया यहाँ नेता होता तो यहाँ कांग्रेस का सफाया ना होता, सब उनको फिर वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कांग्रेसी मेरे दरवाजे नहीं आया, कोई भी कांग्रेसी नेता ने हमको नहीं बुलाया कि राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका आ रही हैं। आप एक इंडिया के ऊपर इंडिया लेवल का एक आदमी है, आपके सामने शंकराचार्य और फलाने और ये श्री गुरु और ये जो है दर सबका चैलेंज है। जो इंडिया ऊपर आदमी हो वो राहुल जी के और प्रियंका जी के आने पर क्या हमको बुलाया गया? हमको मंच पर बुलाया नहीं बुलाया, क्यों? उन नेताओं के दिमाग में था, जो यहाँ रायबरेली का नेता है बड़ा दूध का धोया समझता था, और घर का श्राप लग गया उनको, ये सबको इस्तीफा देना पड़ गया। और फिर भी हमको दुख होता है, क्यों? जो प्रतिपाले वही नरेशु, जो प्रतिपाले वही नरेशु। तो जो हमारा जो रायबरेली को दे रहा है, इंदिरा जी ने दिया, वो सोनिया जी ने दिया, यहाँ लोगों को मिला नहीं है सर। नहीं वो कुछ तो विकास हुआ, इज्जत के पुल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, रेलवे कोच बन रहे हैं। अरे बाबा, लोग पब्लिक को नहीं मिला, विकास तो हुआ। अच्छा एक मिनट, अगर नहीं मिला, एक मिनट, तो किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने आकर के रायबरेली वालों को क्या दिया हमको बोलिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। तो कहने का मतलब है हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ज्यादा देर वहां पर ये इनको जाना भी है, वाणी को विराम देंगे। और विराम देने के पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संदीप पाठक के अंदर वही डॉक्टर साहब ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो किसी का दुख नहीं देख सकता है, और नहीं, और नेता के गुण है उसके अंदर, ये डॉक्टर साहब का भी कहना है। लिहाजा संदीप पाठक के बारे में हमें सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से ये कहना है कि आप उसको अहमियत दीजिए। क्यों? श्याम साधु जैसा लोग संदीप पाठक की अगर प्रशंसा कर सकता है, और हम किसी नेता की कहानी प्रशंसा की है, रायबरेली में तो बहुत से कांग्रेस बिना बदमाशी करे सेवा से आप जीत के आएंगे जी। बस एक ही बात में हाँ, तो अब हम वाणी को विराम देते हैं। देखिए ठीक सर। आज 28 मार्च जब सुबह आपने गधे को देखा था, डॉक्टर राव जिसके बारे में बोल रहे थे, उसी के थोड़ा करीब से लीजिए। हाँ, इसको आप सर पकड़ लीजिए। हम दबाए है महाराज।
और आप हैं सीतापुर में आजकल पोस्टेड हैं, और नैमिष के पास में हरीशचंद्र वर्मा दरोगा जी बड़े भारी अवघड़ पंथ में है। ये पुलिस की नौकरी ज़रूर करते हैं, लेकिन महा अवघड़ हैं और बहुत चमत्कार है इनके हाथों में। तो रस्सी चाहे तो बोल दी। तो आप भी संजोग में आना हुआ। जो अवघड़ पंथ से जुड़े होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। रायबरेली में तो आपका नाम हुआ, और उसके बाद में आप सीतापुर में वहीं हैं, नैमिष सारण के पास पहुंच चुके हैं, और आज आए थे यहाँ मिलने के लिए। तो इसी टाइप की सेवा करके डॉक्टर साहब, और इनके हाथों में भी बड़े चमत्कार हैं, जो एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। हम लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपको अब ये पुलिस की नौकरी करें, कि अब लोगों की ये वो इलाज करें, आने वाले समय में ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का लोगों का जो करीब इनके पहुंचता है उसका इलाज भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। और गड्ढे में काफ़ी बदबू आ रही है। जो ये ट्रेन के नीचे इसके 2 साथी कट गए थे, ये बच गया था, और इसका इलाज भी किया, दवाइयाँ भी रखी थी, लेकिन अंदरूनी चोट होने के कारण वो घाव था अंदर ही अंदर, वो घाव बन गया, कीड़े बन गए। बड़े मुश्किल में इनको आज हम लोग यहाँ किस मुसीबत में लेके आए हैं। नवरात्र के समय चल रहा है, इनकी सेवा से बढ़ करके कोई देवी की आराधना नहीं है। इससे बड़ी ना वैष्णो देवी की यात्रा है, ना विंध्याचल, इसके आगे मैं इस बात को मैं दावे से कहता हूँ। अब इनको 10 दिन 15 दिन 1 महीना यहाँ रखना पड़ेगा। खाना पाना इनको खाना पीना देंगे, इनका ड्रेसिंग यहीं अपना दूसरे अब तो परसों होगा ना श्री राम, अभी कल देखना पड़ेगा क्योंकि कीड़े हैं। तो इसी तरह आएंगे। और ये वेटनरी हॉस्पिटल के सीनियर ड्रेसर या हमारे श्री राम हैं। अब तक हमारे यहाँ इस सैकड़ों जानवरों का इलाज आके कर चुके हैं, चाहे गाय हो, गधा हो, सुअर हो, कुत्ता हो। और वो जो कुत्ता जिसका इलाज 24 दिसंबर से चल रहा है, वो वहाँ लेटा हुआ है वहाँ पर। अब वो करीब करीब अभी 1-2 महीना उसको और लग जाएगा ठीक होने में। इसके परवा पर भी लगा दो महाराज। हाँ, थोड़ा थोड़ा सीधा बोल दो करके, चाहे कि हम लोगों का राहत नहीं। हाँ, यहाँ पर ये छिदूर दवा बस यार, पंगा मत लिया करो ठाकुर। है नहीं, और तो नहीं। बस छोड़े महाराज, हटो। अब इनको बड़ी राहत मिलेगी, इतनी राहत इनको मिलेगी कि हद से ज़्यादा। इतनी भयानक बदबू आ रही है। कोई बात नहीं, चलेगा। आओ इधर आओ, यहाँ आइए, आइए साहब। अरे राम, तो दुनिया जो है बड़ी विचित्र है। अब बताइए, पुलिस में दरोगा और इतने बड़े अवघड़, कहीं अरे हम उसको अब देखिए, आज इनको यह बता था कि नवरात्र में इनको इतना बड़ा भारी पुण्य मिला। अरे नवरात्र में गधे की सेवा बहुत बड़ी बात है, ये संजोग है। तो आप देखिए, मजबूत रहे, पकड़े धकड़े तो सब काम बन गया, वरना 2 आदमी 3 आदमी लगते, हम कहाँ से महाराज, हम कहाँ से आदमी बोले लगते। शंकर। यही है सब। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, ऐसे लोग दर्शनीय होते हैं। साबुन नहीं था। अरे जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा है ना सर, ये लोग रात दिन यही करते करते वही बनाओ, रात दिन ये लोग करते करते इसके वो हो जाते हैं।
अब सड़े घाव में हाथ उंगली डाल डाल के लोग कीड़े निकालते हैं। तो हमने इनसे लोगों में ये हम बहुत पहले हम कैमरे में कह चुके हैं, इनसे बड़ा पंडित कौन होगा। यहाँ लोग जातवाद की बात करते हैं, हमारे किधर ठहरने यहाँ लोग जातवाद की बात करते हैं, तो इनसे बड़ा महान इनसे बड़ा कौन शंकराचार्य है? नहीं है। उंगली डाल डाल के कितना देखी भयानक बदबू आती आ रही, कीड़े निकाल रहा। तो कहने का मतलब है कि जो महान सेवा करे वही महान है। महान काम जो करे, महान कार्य करे, वही महान है। अब आने वाले समय में यहाँ लोग कहेंगे साहब दरोगा जी तरक्की कर जाएं, एसपी बन जाएं, जिनके मन में लालसा नहीं है, क्यों अवघड़ पंथ कहेंगे, महा अवघड़ है। तो जो अवघड़ पंथ का होता है उसके लिए कुछ चिंता और फिक्र और ये कुछ माने नहीं रखता। तो आने वाले 2 अप्रैल को आपको फिर रैली बुलाए हैं मनहेरू में, हनुमान मंदिर में आपका सम्मान है, उसी में आपको आना है। और दुनिया में है इसलिए सीढ़ी बनती है कि लोग देखें कि पुलिस में दरोगा अब आके यहाँ गधे को पकड़ करके उसकी ड्रेसिंग करवाएं, ये इससे बड़ी महान बात क्या होगी। ऐसे संसार में आज इसी से धरती आज का बनती है। और जिस दिन ऐसे लोग नहीं रहेंगे उसी दिन मामला पलटा, तैयार रखिए आप। ठीक है, अब हम वाणी को वो विराम दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इनका नाम भी जय श्री राम है। आज 29 मार्च 2012 है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। 2-3 दिनों के बाद जो